everyone. I am Rana Ravi from Committee on MSME and Startup. I would like to welcome our speaker, CA Nirav Khanna sir, and our coordinator, CA Sobna Ruchlani ma'am, for today's Pathshala series. Over to you, ma'am. All right. Thank you, sir. Am I audible and visible? Yes, ma'am. All right. Good afternoon, everyone. Welcome to 75th MSME Pathshala Series 2.0. So this webinar is conducted by Committee of MSME and Startup ICAI under the ICAI MSME ecosystem. Today's topic, pre-packed insolvency resolution process of MSME is extremely relevant in today's evolving business environment. As CAs, this session is especially significant for us because pre-pack given us as an opportunity to act not just as professionals but turnaround partners for MSMEs. I feel privileged to introduce our speaker, CA Nirbhay Khanna sir, Managing Partner of B. Das Gupta and Company, Prayagraj, with 15 plus years of experience in corporate finance, taxation, and many other areas. He brings both strong experience and practical insights. He has advised 250 plus FPOs across India and led multiple M&A, private equity, and restructuring engagements. We are honored to have you with us today. Over to you, CA Nirbhay Khanna sir. Thank you, Shobna ji. And it is an extreme pleasure to be here speaking and discussing the topics on MSME portal. And I'm really happy to have you all here discussing this interesting topic. So, without wasting any further time, I would just like to start my topic so that we can discuss things in details and we may go into depths. If it is a possibility in time, we can even discuss certain forms and other formalities as well. But to start with, so my topic is pre-pack insolvency resolution process. And before going into the details of pre-pack insolvency resolution process, I think we are supposed to know what insolvency process is and what Insolvency and Bankruptcy Board of India is and how it actually came into picture. So to start with, I'm just sharing my screen and how we are going to deliver this webinar. So we will start with introducing how this insolvency resolution process came into picture, what were the insight, eventually certain topics upon key understanding about insolvency and the people and structure in insolvency process. And then eventually we'll come to pre-pack insolvency, why it came, and eventually we'll discuss all the provisions and how it actually impacts MSME. So this is how we will go. And if we actually get enough sufficient time further, so we can even discuss relevant provisions and sections under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code of India for pre-pack insolvency. So I'm just sharing my screen. Just a second. Shobna ji, my screen is visible to you people. Can you just please confirm? Yes. Yes, sir, Yes, it's sir. visible. Okay, thank you so much. Okay, so we are just introducing Insolvency and Bankruptcy Code that was introduced in 2016. And it is a summary on the topic just to introduce what Insolvency and Bankruptcy Code is about and eventually some key features that we can understand eventually to understand the core topic that we are about to discuss, that is pre-pack insolvency. So to start with pre-pack insolvency, we'll try to understand what insolvency and bankruptcy procedures are and what key issues are related to the same. Okay, so I just need to tell you a brief story how it all started. In 1991, Government of India liberalized Indian economy and allowed people and organization and corporates to enter into the Indian market by introducing liberal policy and open market to all over the world. So this was the initial stage when things started. And
Indian markets were opened to the corporates globally and operate freely by right entry to the Indian economy in 1991. Then in 2009, Government of India introduced right to compete. So what the concept of right to compete was, all the organizations that were operating in India can compare and make sure that there are compliance and procedures to make sure that there are equal procedures and possibilities for all the organization working in India to compete and have a competitive market for everybody. So we should look at this way. Government introduced entry points to the corporates and MNCs in 91, and they made competitions and right to compete a possibility and a legal structure in 2009. But what the problem was, people can get entry into India, they can operate and have an equitable market in Indian market, but they didn't have the right procedures and legal procedures to exit the Indian market. So the concept was, by bringing Insolvency and Bankruptcy Code of India, all the organizations entering the Indian market were allowed a legal formal procedure that assisted them that they can eventually exit the Indian market when it is a possibility or even in cases of stress. So this actually completed the complete cycle, and the businesses gained more trust in Indian economy. So the features, if we can go by line, so time bond process and comprehensive law, one law for all problems, and on the top, Insolvency and Bankruptcy Board of India on top of the complete procedure. So, in summary, after 2016, this process got complete as right to entry was given in 1991. Right to compete was finally provided in 2009, and right to exit was available in 2016 by engaging Insolvency and Bankruptcy Code of India. So the basic framework of Insolvency and Bankruptcy Board actually runs in two possible structures. So one structure is Insolvency and Bankruptcy Board, and other is adjudicators. So Insolvency and Bankruptcy Board of India is the top body that actually registers, records, and regulates the law that actually governs the Insolvency and Bankruptcy Board. And under the adjudicating authorities, we have two authorities assigned. One is National Company Law Tribunal and the other is Debt Recovery Tribunal. मैं बीच बीच में अगर आपसे हिंदी में बात करूं तो मुझे लगता है कि शायद काफी सारी ऑडियंस को मैं अलग से रिलेट कर पाऊंगा. आई विल ट्राई टू कीप बोथ द लैंग्वेज अवेलेबल सो आई कैन जस्ट एक्सप्लेन द टॉपिक इन अ बेटर फ्लूसिड मैनर. ठीक है. ओके. सो इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि जब इसको रिकॉर्ड किया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड को, सो जो लीगल अथॉरिटीज का या जिन लोगों ने इस लॉ को बनाया, they had this in mindset that there has to be some authority that actually takes care of how the law and operations work. उनके प्रोसीजर्स ठीक ठीक से काम करते हैं. तो वो होता था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि टॉप बॉडी होता है. और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं उसको एड्रेस करने के लिए दो बॉडीज बनाई गई. द टू बॉडीज वर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल. सो दोज आर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज. अब बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो लॉ इंट्रोड्यूस करता है, दिस एक्चुअली इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ दैट वर्क्स ऑन कॉर्पोरेट्स एंड अदर देन कॉर्पोरेट्स. सो अदर देन कॉर्पोरेट्स में कौन कवर होते हैं? सारे के सारे
लोग जो कि कवर होते हैं अदर देन कॉर्पोरेट, दैट वुड बी पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी एंड अदर सिमिलर स्ट्रक्चर्स। हमारे पास जो पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड कोर लॉज हैं उसको अभी लीगलाइज नहीं किया गया है। सो हमारा जो एनसीएलटी के अलावा डीआरटी का पार्ट है वो गवर्न करता है केवल और केवल उतने पोर्शन के लिए जो कि एमएसएमई कॉर्पोरेट कैटेगरी में आते हैं, जिनके लिए अभी हम प्रीपैक को डिस्कस करने वाले हैं। सो विल गो टू दैट। सो एनसीएलटी टू फॉर द पर्पस ऑफ corporate organizations and DRT for people other than corporate get covered under Insolvency and Bankruptcy Board of India. So, अब इसमें की एंटिटी कौन कौन होते हैं, who people are actually the key bodies that help us run and govern the Insolvency and Bankruptcy Code. So, we have Insolvency Resolution Agency, जो कि प्रोफेशनल कोड एंड एथिक्स स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि मेक श्योर करते हैं कि प्रोसीजरल्स इश्यूज को और सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए और उसको मॉनिटर किया जाए विद टाइम। देन कम्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ऑल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, company secretaries, LLBs, and other similar organizations bodies can act as an insolvency professional after clearing insolvency professional exams that is conducted by the Insolvency and Bankruptcy Board of India. So उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 7 years का, और उसके अलावा आपने एक एग्जाम पास किया होना चाहिए जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्जाम होता है। इसको आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी दे सकते हैं। इसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज offered centers, and various centers can be engaged online. You have to pay for a fees of around 5,000 rupees to apply for exam, and once you have cleared the exam you will be given a professional identity of insolvency professional. One other interesting thing that I can inform is, if a person is a chartered accountant in practice, so most of the cases a chartered accountant in practice cannot have parallel degrees in a legal capacity, in a professional capacity, but being an insolvency professional, this is one exception where a chartered accountant in practice can also act as a insolvency professional at the time being also practicing as a practicing chartered accountant in his capacity. So आप दोनों चीजों को साथ साथ ऑपरेट कर सकते हैं। This is one opportunity that we can look as chartered accountants in practice. इसमें एक इनपुट ये भी बता सकता हूं मैं कि आज की तारीख में, क्योंकि we are actually at the end of 2025, total number of persons that have cleared the insolvency and bankruptcy exams as insolvency professional, that count is only around 4,300. पूरे हिंदुस्तान में, हमारे कंट्री में केवल 4,300 ही लोग हैं जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्जाम क्लियर करके रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा if we consider how many people out of the whole set of persons that have cleared the insolvency professional exam, people carrying a insolvency professional license, the only total number that comes out to is around 1,000 people. मतलब ऑल ओवर इंडिया केवल और केवल वो लोग जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का लाइसेंस लेकर के रन कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनलिज्म की, वो केवल 1,000 के ही हैं। तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के तौर पे एक्ट करें, और वी कैन फाइंड ऑल पॉसिबिलिटीज एंड वी कैन वर्क एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ओके, अदर देन दैट देयर इज अ एंटिटी एज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। सो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का काम होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव डेट के रिकॉर्ड्स रखते हैं कॉर्पोरेट्स के, और जब कभी भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में ऑर्गेनाइजेशन जाती है तो एक इवेंचुअली हम अभी टर्म को आपको और इंट्रोड्यूस करेंगे कि रेजोल्यूशन प्लान। सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल gets assistance from information utility to get the resolution plan prepared, जो कि इवेंचुअली हम एजुडिकेटिंग अथॉरिटी और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं, और उसके अप्रूवल के बाद इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को फाइनलाइज किया जा सकता है या डिसअलाउ किया जा सकता है।
सो कोर कंसेप्ट, हमें 3 डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है. सो we need to understand what insolvency या insolvent person are, what is bankruptcy, and when is the position, and when we call an organization or a person getting liquidation or liquidated. So when can we say a person or an organization is insolvent or insolvency? A financial state where an individual or corporate entity is unable to pay their dues as they become due. This represents a liquidity crisis requiring immediate intervention. So, for example, if a person is supposed to pay for some payments, those are due now. But in the current capacity, if he is incapable to make those payments, in such case, a person will be called as insolvent. We have to understand, if we are calling a person insolvent, this only means that in the current capacity, in the current scenario, he is not in a position to pay for the dues. But this does not mean that he cannot pay those dues in the future date. The same comes our other definition, that is bankruptcy. So if a person gets bankrupt, this means that in the current scenario, this person cannot make payment for the dues, but also in the future dates, he is not in the capacity that he will be able to pay for the dues in future dates even. This means insolvency or insolvent is a state that says that the person is incapable to pay for dues at the present after the due date of payment. But if a person is unable to pay for the dues, unable, that he cannot pay it in the future date. If a person is unable to pay, he will be considered as bankrupt and he will be filing a bankruptcy eventually when we realize that whatever asset he is carrying, the organization is carrying, those assets are sold and revenues are generated out of selling those assets. This process is called as liquidation. The process of winding up a company's operations and systematically selling its asset to settle outstanding liabilities. This represents the final stage where revival is not possible. So, what the concept of insolvency is and why it was introduced: if an organization is not doing well and it will eventually close down, so it will not only affect or harm the person owning the organization, but other people as well who can be considered as the stakeholders. वो लोग जिन्होंने इक्विटी के अलावा आपके साथ पैसे लगाए, उनके पैसे भी तो डूब जाएंगे. सो उन ऑर्गेनाइजेशंस को और उन लोगों को जो ओनर इक्विटी के अलावा भी होते हैं, उनका भी लॉस होगा. सो दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड concept was introduced to make sure that overall scenarios, everybody in an organization gets benefited. If an organization is not doing good, after making certain reservations and modification in the structure, the organization can still be in a running mode so that everybody who is a stakeholder gets better paid. Because अगर ऑर्गेनाइजेशन बंद करके उनके पेमेंट्स दिए गए तो शायद उनके लॉसेस ज्यादा बड़े होंगे, लेकिन इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्टिल रनिंग, सो पॉसिबिलिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ व्हाट इज ड्यू फॉर एवरीबॉडी इंक्रीजेस. सो हर एक कोशिश इसमें यह की जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन बंद ना हो और उसको सर्वाइवल मोड में रखा जा सके, ताकि ओवरऑल सिनेरियो में हम उसको बेहतर बेनिफिट्स दे सके स्टेक होल्डर्स को. अगर इवेंचुअली वो पॉसिबल नहीं हो पाता, और हमने सब तरीके के पॉसिबल प्रयास कर लिए हैं, वी हैव गिवन ऑल द पॉसिबल एफर्ट्स टू मेक श्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन रन, बट इवेंचुअली इट नेवर वर्क. द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू गो इनटू वाइंडिंग अप and the liquidation has to be done. That means all the assets or the organization have to be sold and
after selling those assets, whatever revenue gets generated, that has to be paid to everybody who can be called the stakeholder to the organization. So what the question comes to our mind कि insolvency and bankruptcy code का benefit क्या है and how actually it helps anybody in overall scenario as an economy, as individual, and otherwise as the stakeholders. So we have certain points. I have marked 5 points that can be figured out. There can be other possibilities as well, but still the key 5 points that I can figure out are ease of doing business. As in the beginning of this session, I introduced key right to entry, right to compete, and eventually right to exit was introduced, and insolvency and bankruptcy code allowed investors and the stakeholders to see a possibility in a situation where they can possibly exit the business if it is in distress or otherwise also. So world over एक ranking निकाली जाती है. The ranking is known as ease of doing business. अभी recent time में this ranking has been discontinued by the organization that was posting this, but the last record that I can figure out was in 2020. So Indian ranking from 2014, out of 190 economies all over the world, in 2014 India was standing at 142nd position. Ease of doing business के concept के लिए इंडिया की 142nd पोजीशन थी 2014 में, लेकिन 2020 जो लास्ट हमारे पास रिकॉर्डेड रैंकिंग आई है उसके बाद से रैंकिंग अभी इन्होंने नहीं निकाली है फॉर वॉट एवर रीजन आई कैन नॉट कमेंट. द लास्ट रैंकिंग दैट वी हैव in the Indian perspective, out of 190 economies, India stands at 63rd position in ease of doing business, and that is a big jump in a global scenario. तो ये एक हमारे पास फिगर पॉइंट्स है जहां पे हमको ये दिखता है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया या उस तरीके के फर्दर रिफॉर्म्स करने की वजह से हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को ग्लोबल सिनेरियो में बेहतर रिकॉग्निशन, बेहतर रैंकिंग मिल पा रही है. दैट वाज वन. सेकंड, हमारे पास वो लोग जो कि हमारे स्टेक होल्डर्स में आते हैं. की स्टेक होल्डर्स कैन बी बैंक्स, एंड इवेंचुअली जब बैंक्स के पास लोन्स डिस्ट्रेस में हो जाते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी. एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी क्या होती है? वो बैंक के पास जो लोन है जो कि स्ट्रेस्ड है, तो ARC क्या करेगा? ARC will go to the bank. For example, say there is an organization with a loan that bank owes about 100 crore rupees, and ARC will go to the bank and say, we can buy this loan, the stressed asset, at say 60 crore rupees. So बैंक को क्या बेनिफिट होगा? बैंक को जो उसके पैसे ब्लॉक थे, एक हेयर कट के बाद भी उसको 60 करोड़ रुपए रिकवर हो जाएंगे. And now ARC will put in all the efforts and expertise to make sure that they can recover whatever maximum revenue that they can generate. So by introducing IBC, both the organization, banks and ARC are in a better, stronger position to recover loans and have a reduced value of NPAs. So हमारा ये टाइम बॉन्ड प्रोसेस है और उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो काफी स्ट्रिंजेंट हैं, दैट मेक श्योर दैट द लोन्स गेट रिकवर्ड इन अ बेटर पॉसिबल मैनर्स. थर्ड, लॉक्ड अप एसेट्स. Stressed organization generally carries a lot of locked up assets that are there with the organization but not getting used or maybe not utilized in the right way. With IBC introduced, time-bound framework ensures rapid release of blocked asset, improving capital circulation and enabling productive redeployment of resources. And eventually उसके साथ क्या होता है? Investor confidence gets boosted. Clear exit rights and predictable outcome improves
domestic and international investor trust in Indian markets. And eventually जब ये सारी चीजें होती है तो क्या होता है कि इंडिया में लोगों का ट्रस्ट बढ़ने की वजह से corporate bond market also gets a boost, and eventually Indian corporates like Indian government bonds and other government bonds, the corporate bonds also gets a better recognitions, strengthen credit discipline and recovery mechanism have crystallized expansion of Indian corporate bond market. So these are the key benefits that we can figure out from introducing insolvency and bankruptcy code. Before coming to the main topics, this is the last slide that I will be introducing. Insolvency and bankruptcy resolution process, a structured approach. So how the process work and what are the ways that the insolvency bankruptcy code gets its actual structure and how it actually gets evolved, accepted, restructured, or maybe rejected so that organization can go into liquidation eventually if it is not accepted. So, features of insolvency bankruptcy code. Time bond. 180 days resolution period, extendable but can be completed in 90 days for efficacy. So, organization has to complete the insolvency proceedings within 180 days, and in certain cases there can be allowed an extension of another 90 days. Insolvency bankruptcy code is a comprehensive law because it covers companies, LLP, partnership and proprietorship. So all category of possible business structure gets covered under insolvency code, and it address needs of all type of organization. Based on the type of organization, person has to go to the relevant adjudicating authority, NCLT or DRT, as the case may be. And it is a one unified law, single framework for all insolvency cases across entity types. So these are the key features. And once an organization is identified as a prospect to go under insolvency, so what are the procedures and resolution sequence? Resolution sequence comes under possible 4 steps. Under step 1, a committee of creditors and borrowers are formed and they approach NCLT or DRT within 15 days. And if the plea is accepted, they, under second step, go to the lender and create a committee, a formalized organization structure, and committee of creditor identify an insolvency resolution professional for the company for an interim period. Step 3, within 180 days and to a further extension of 90 days, committee of creditor will prepare debt recovery plan for resolution process. And under the final step, once the debt recovery plan is prepared, it will be forwarded to the resolution plan to the committee of creditor, and by voting, resolution plan can possibly be accepted or rejected. So resolution sequence would be like this: application filed, creditor or borrowers file application with NCLT to initiate insolvency proceedings. Then committee of creditor formation. A committee of creditors, those are financial creditors in some organization. If financial creditors are not there, then there is a certain criteria to select committee of creditors. So committee of creditors, those are not related, are formed, and resolution professional is appointed to take control and invite resolution plan from interested parties. So there is a resolution plan that would say that this organization is not doing good, and this is how we can possibly revive the organization, and we can again run the business by some takeovers, some haircuts and other possibilities. So then organization in a reduced version maybe
may run all over again, and organization can pay back the stakeholder in a possible better manner. And if the resolution plan is finalized within the time frame, it goes to the committee of creditors for a vote on debt recovery plan. If the committee of creditors approve the debt recovery plan by 75% voting approval, so plan is accepted. Or if the plan is not accepted and it is not approved by the organization, by the committee of creditors, the organization has to eventually go into liquidation. So this is the sequence of event, how insolvency bankruptcy code procedures are undertaken, and how IBC helps an organization to release stressed asset and increase value to the stakeholder as a whole. So this was a general introduction page. Now I hope कि मैंने एक ओवरव्यू आपको दे पाया हो कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से क्या बेनिफिट मिलता है, उसमें कौन कौन की स्टेक होल्डर्स होते हैं, और इवेंचुअली क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने से हम इंसॉल्वेंसी के स्ट्रक्चर्स में अपनी प्रोसीडिंग्स को फर्दर ले जा करके और इंसॉल्वेंसी कंप्लीट करा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं. मैं दूसरी स्लाइड पे आना चाह रहा हूं. मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये पीपीटी अभी आपको विजिबल होगी. Yes, sir, it's visible. Thank you. Okay, so coming to our main topic, pre-pack insolvency resolution process. बेसिकली प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में बात करते हुए मेरे पास कुछ मेंशंस हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं. प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस डिफाइंड है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया में अंडर सेक्शन 54. So we have sections from section 54A that runs to eventually section 54O. So from section 54A to O, pre-pack insolvency resolution process are operational and covered. So somebody who wish to know what pre-pack insolvency resolution process is has to read these sections to understand how pre-pack insolvency resolution process are taken and eventually how to go with it. So certain key inputs upon the pre-pack insolvency resolution process. Let's just see. Okay. Pre-pack insolvency resolution process. In short, we will call this PPIRP. This is mentioned in chapter 3A of IBC. So the question comes to our mind, why was this amendment needed? Micro, small and medium enterprises are critical for Indian economy as they contribute significantly to the GDP and provide employment to a sizable population. Everybody in the country can possibly see small shops, medium-sized organizations, and to a certain extent, large organizations. Most of these organizations are giving a lot of employments to all kind of Indian citizens, and those are covered under definition of MSME, and MSME Act defines micro, small and medium enterprises under section 7.1. So
pre-pack insolvency resolution process is specifically introduced to facilitate insolvency procedures in a easier manner to MSME. And MSME is a very significant part to the Indian economy. So it was very urgently needed. And Indian executory part have introduced the pre-pack insolvency resolution process. And to be honest, if we can compare other countries, the concept of PPIRP is in existence in many other countries way back. And we are very late in introducing the PPIRP in Indian context. But still, most of the context is copied from other countries' PPIRP resolutions. So it holds a lot of similarity with the laws that are there in England, US, and some other organizations, some other countries. So it is considered necessary to urgently address the specific requirement of MSMEs relating to resolution of their insolvency due to the unique nature of the business and simpler corporate structure. It is considered expedient to provide an efficient alternative insolvency resolution process for corporate person classified as MSME under the code, ensuring quicker, cost-effective, and value-maximizing outcome for all the stakeholders in a manner which is least disruptive to continuity of the business and which preserves the job. There is one more mention here that PPIRP can only be given or taken by organization that gets covered under the category of corporate MSME. So all the organizations, those are not getting covered under the category of corporate MSME, cannot be converted into PPIRP and they cannot opt for pre-pack insolvency resolution process. Just to make sure that organization have better understanding and belief in PPIRP, there are lot many places where precedence of other countries has been taken and preferences has been given to PPIRP over regular CIRP. So there is a comparison chart that I have marked here. Disposal of application under section 54C and section 7, 9 and 10 of IBC. So this is a comparison where we talk about if in a situation, if an organization goes for pre-pack insolvency and eventually somebody initiate insolvency regular proceedings, which will be considered first and in what situation? So disposal of application under section 54C is pre-pack insolvency and section 7, 9 and 10 talks about financial creditors, other creditors and debtors in a regular insolvency proceedings. So in situation where application under pre-pack insolvency is pending and during such pendency, application under regular insolvency procedures under section 7, 9 and 10 is filed, adjudicated authority passes order for application under section 54C before considering application under section 9, 10 and 7. So there will be a preference will be given to section 54, that is pre-pack, over a regular insolvency proceedings if it is initiated and it is pending and somebody initiates the regular insolvency proceedings. Then if the application under regular proceedings is filed and pending
and within a period of 14 days, a pre-pack insolvency proceedings application is filed with the adjudicating authority, what will happen? Notwithstanding that there is already a pending proceedings under regular insolvency, corporate insolvency, pre-pack insolvency will be given preference by the adjudicating authority, disposing the application under section 54C first, and then eventually they will consider the corporate insolvency proceedings under section 7, 9 and 10. मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये तो हद हो गई है कि पहले से ही कोई एक प्रोसीडिंग्स चल रही भी हो और हमने इनिशिएट कर दिया हो रेगुलर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसीज को, अगर 14 दिन के अंदर अंदर प्री पैक इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स को शुरू किया जाएगा तो क्या होगा कि प्री पैक इंसॉल्वेंसी को अपर हैंड दिया जाएगा और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसीज को उस समय कंसिडर ना करते हुए पहले प्री पैक इंसॉल्वेंसीज के ऑर्डर पास करेंगे एंड उसको ही पहले कंफर्म किया जाएगा कि उसकी प्रोसीडिंग्स को हम फर्दर टेकअप करते हैं। लेकिन इन द लास्ट अगर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसीज के सेक्शन 9, 10 एंड 7 के प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गए और उसको इनिशिएट हुए 14 डेज से ज्यादा हो चुके हैं, इन सच केस if somebody initiates pre-pack insolvency proceedings against the organization, the adjudicating authority will first dispose of the regular corporate insolvency and that will be given preference. लेकिन इसकी कंडीशन कब होगी कि 14 दिन से ज्यादा अगर बीत चुके हैं और अभी प्रीपैक की कोई प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई थी। अगर 14 दिन के बाद प्रीपैक का कोई भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल first consider section 7, 9 and 10 corporate insolvency proceedings rather than pre-pack insolvency. There is another mention कि provision of section shall not be applicable where section 7, 9 and 10 is pending on the date of commencement of this ordinance. So when this ordinance was passed, ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर इस तरीके की कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट होती तो उसको ये सुपरसीड नहीं करता और उनको एज इट इज पुराने प्रोसीजर से सेक्शन 9, 10 एंड 7 को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो हमारे लिए अब रेलिवेंट नहीं है बिकॉज इट इज क्वाइट अ टाइम नाउ, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। ओके, हम मेन सेक्शंस की तरफ से आते हैं और एक मेंशन हमारे पास रह जाता है कि की डेफिनेशंस, की कंसर्न हमारे पास और क्या है। So certain definition that we can talk about is base resolution plan. Before discussing the details of pre-pack insolvency, we need to understand कि if we go under pre-pack insolvency, we have to propose a plan where we will tell the possible solutions that we can offer to revive the organization and to make the organization operational, delivering better values. What all possible resolution that we can think of has to be initiated. That is mentioned as resolution plan provided by the corporate debtor under section 54(1), 54A 4C. Then another definition that we should know is preliminary information. Preliminary information means a memorandum submitted by corporate debtors under section 54G1B that says all the possible prospects about the insolvency proceeding that is getting initiated. Other pre-pack insolvency date means the date of admission of the application for initiating pre-pack insolvency proceedings by the adjudicating authority under section 54C4. So these are certain definitions that we should keep in mind before going into the core provisions of pre-pack insolvency resolution procedures. Okay. Just a second. So the question comes to our mind कि who can apply under PPIRP? Only a corporate debtor
classified as MSME, that is defined under section 7(1) of MSME Act, can apply for PPIRP. If somebody who is not registered under MSME and is not a corporate debtor, such person cannot apply for PPIRP. इसको साधारण शब्दों में अगर समझते हैं तो ये कि हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो कॉर्पोरेट रजिस्टर कर रखा है, लेकिन हमने उद्योग आधार वाले रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखे हैं। सो उस सिचुएशन में अगर हमारे को इसकी रिक्वायरमेंट बनती है कि हम किसी तरीके के इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जाते हैं जो कि प्री पैक इंसॉल्वेंसीज के बेनिफिट लेकर के होगी, तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि वो एमएसएमई की डेफिनेशन में कवर अप नहीं हो पा रहा है। और भी बहुत सारी उसमें कैटेगरी आती है टर्नओवर्स को लेकर के और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स को लेकर के, लेकिन दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली कम्स टू आवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि जब हम ये इनिशिएट करना चाहते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट हैव उद्योग रजिस्ट्रेशन, so they cannot apply for PPIRP and they get ineligible even though they come under the category of corporate debtors. So who can apply? Application for insolvency proceeding under PPIRP may be made with respect to corporate debtor classified as MSME as defined under section 7 of MSME Development Act. Application may be made with respect to MSME corporate debtor who commits default referred under section 4 subject to the following condition. If there is a default, then only any insolvency proceedings can be initiated under PPIRP. There is one exception even that we can discuss eventually in some time going further in slides. So application may be made by MSME CD who commits default under the following condition. It has not undergone PPIRP or completed CIRP during 3 years preceding the initiation date. So if some organization has already undergone PPIRP or corporate insolvency proceedings within a period of 3 years, such organization cannot again file for pre-pack insolvency. Second, if organization is undergoing a corporate insolvency proceedings, such organization also cannot file for PPIRP. हमने थोड़ी देर पहले ही कंपैरिजन पढ़ा था सेक्शन 11A वाला, जहां पे हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे अगर ऑलरेडी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स चल रही है और एक सर्टेन टाइम फ्रेम शुरू हो चुका है, तो फिर वो PPIRP की प्रोसीडिंग्स में नहीं जा सकते, प्री पैक में. थर्ड, if any organization has already gone into liquidation and order for liquidation is passed under section 33, अगर liquidation order already pass हो गया है तो फिर उसके अगेंस्ट में प्री पैक की इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स करना पॉसिबल नहीं होगा. फिर it is eligible to submit a resolution plan under section 29A. ओके, यहाँ पे सेक्शन 29A डिफाइन किया जा रहा है जो कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में मेंशन्ड है, और वहां पे ये कहा जाता है कि सर्टेन क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो उसी पर्सन को रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने की पॉसिबिलिटी होती है, एंड सच पर्सन कैन ओनली अप्लाई फॉर अ रेजोल्यूशन प्लान एंड देन ओनली इवेंचुअली दे कैन अप्लाई फॉर pre-pack insolvency or maybe corporate insolvency resolutions. In both the case, if section 29A is not satisfied, application under pre-pack or corporate insolvency regular proceedings cannot be initiated. Then a financial creditor or corporate debtor not being its related party having proposed the name of insolvency professional to be appointed as resolution professional conducting the PPIRP and financial creditor representing 66% in value have approved such proposal. So financial creditor of the corporate debtors मतलब organization और से ABC Limited ने पैसे ले रखे हैं XYZ बैंक से, तो ABC Limited will be called as the corporate debtor
एंड XYZ बैंक अगर एक लौता उसका डेटर है, जिसने क्रेडिटर है, जिसने पैसे दिए हैं, तो XYZ बैंक विल बी फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर 90 अप्रूवल देते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम को 66% ऑफ द वैल्यू, तो उसका प्रपोजल अप्रूवल होगा और वो अप्लाई कर पाएगा इस कैटेगरी में। Majority of the director have to provide a declaration stating that inter alia that the corporate debtor has filed the application within the definition within period of 90 days. एक डिक्लेरेशन देना होगा कि 90 दिन के अंदर हम प्रीपैक का डिक्लेरेशन फाइल कर देंगे। दूसरा, हम ये एप्लीकेशन डिफ्रॉड करने के लिए नहीं फाइल कर रहे हैं। There has to be a declaration saying that this proceeding is not initiated and we undertake that we are not intending to defraud any person. Third, they will also declare name of insolvency professional proposed and approval to be appointed by as the resolution professional under clause E. The member of corporate debtors have to pass a special resolution. अगर कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, और अगर LLP है तो उस केस में 3/4 of the total number partners have to approve the resolution saying that the organization is going into pre-pack insolvency resolution proceedings. इसके बाद corporate debtor has to obtain approval of financial creditors, हमारे केस में XYZ लिमिटेड बैंक, कि कॉर्पोरेट डेटर्स को 66% से अधिक की वैल्यू के जो कॉर्पोरेट डेटर्स होंगे उनको अप्रूवल देना होगा कि हाँ आप प्रीपैक इंसॉल्वेंसीज में जा सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन पास बाय द मेंबर हैज टू बी इनिशिएटेड एंड बेस रेजोल्यूशन प्लान हैज टू बी कंफर्म रेफरिंग टू सेक्शन 54K। तो रेजोल्यूशन प्लान होना चाहिए, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए LLP है तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह 3/4 के पार्टनर का अप्रूवल चाहिए होगा, और अदर सच इंफॉर्मेशन एज मे बी आस्क्ड फॉर। तो स्पेसिफाइड जितना भी होता है वो सब रूल बुक्स में जाना होगा, तो हमें उसके रूल्स चेक करने पड़ेंगे। फर्दर, ड्यूटीज ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बिफोर इनिशिएटिंग PPIRP। सो मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रीपैक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर दिया और एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर दिया बिफोर इट इज गेटिंग एक्सेप्टेड कि प्रीपैक इंसॉल्वेंसी होने वाली है कि नहीं होने वाली है। ड्यूटी गिविंग अथॉरिटी मना भी कर सकती है, अलाउ भी कर सकती है। सो इन सच केस इफ अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अपॉइंटेड बिफोर इनिशिएटिंग द प्रीपैक इंसॉल्वेंसी, तो उसकी ड्यूटीज क्या होंगी? सो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटीज डिफाइन होती है सेक्शन 54B में, दैट सेज he will prepare a report confirming the corporate debtor meets the requirement of section 54A. Then he will file for the report and other docs with the board of director and perform such other duties as may be specified. So वो एक रिपोर्ट बनाएगा जो कि डिफाइंड है सेक्शन 54A में। उसके बाद फाइल करेगा वो सारी रिपोर्ट्स और उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बोर्ड के साथ, और बाकी जो सारी ड्यूटीज उसको अपॉइंट की जाएगी वो दिया जाएगा। ड्यूटीज ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल above shall cease if, अब अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट डेटर्स फेल टू फाइल फॉर द एप्लीकेशन, जो हमने थोड़ी देर पहले कहा था 90 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, तो अगर प्रीपैक इंसॉल्वेंसी ही एग्जिस्टेंस में नहीं रह गई तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होगा उसको भी अपनी पोजीशन से हटना पड़ेगा। या ऐसा हो कि एप्लीकेशन सबमिट हुई थी और एडमिट हो गई या रिजेक्ट हो गई, सो अगर एप्लीकेशन गेट्स एक्सेप्टेड, so he will be appointed in a different capacity, and if it get rejected the pre-pack also gets rejected and eventually his position gets declined, तो फिर उसको भी हटना पड़ेगा। फी जो भी उनकी कॉस्ट होगी म्यूचुअली एग्रीएबल, उसके हिसाब से प्रीपैक इंसॉल्वेंसी की कॉस्ट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दी जाएगी, एंड वो कॉस्ट बॉन्ड की जाएगी कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा। सो अदर सेक्शन इज सेक्शन 54C। ये हमारे प्रीपैक इंसॉल्वेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में से एक आता है, एप्लीकेशन टू इनिशिएट प्रीपैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। सो हमको इसको ऐसे समझना पड़ेगा, सेक्शन 54C टॉक्स अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर प्रीपैक। सो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कैन फाइल फॉर एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग प्रीपैक इंसॉल्वेंसी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। फर्स्ट, द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट
shall, along with the application, furnish a declaration, special resolution, and approval of the financial creditor. And there has to be mentioned a name of insolvency professional proposed under section 54B, a declaration relating to the existence of any avoidable transaction. हमें डिफाइन करना पड़ेगा ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको अवॉइड किया जा सकता है और जो हमारे प्रीपैक के ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं होंगे, उसको हमें अलग से डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि इवेंचुअली हमारी कॉस्ट ओवरऑल इंपैक्ट ना हो. एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू BOA of corporate debtors and such other documents as may be specified. Eventually, adjudicating authority will, within 14 days of the receipt of the application by an order, या तो वो admit कर लेगा and application if complete, otherwise he will be rejecting that application अगर application पूरी तरीके से complete नहीं है, लेकिन तब पर भी उनको 7 days का एक time frame देना पड़ेगा कि आप उस पर refer कर सकते हो. Rectification की possibility होगी तो उसको आप correct करेंगे, अगर तब भी नहीं होता है तो it is to be rejected only. Once the application is accepted, the pre-pack insolvency shall be considered commenced from the date of application acceptance by the adjudicating authority. तो ये बेसिकली एप्लीकेशन का प्रोसीजर है. हमारे को यहाँ पे एक बात और समझनी होगी, जैसे हम इनिशियली डिस्कस कर रहे थे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के बेसिक प्रोविजंस जो शुरुआत में थे, तो हमने कहा था ना 180 डेज प्लस 90 डेज. प्री पैक में वो टाइम कम कर दिया गया है, ये मेक श्योर करते हुए कि MSMEs गेट बेनिफिटेड बाय रिड्यूस टाइम फ्रेम सो दैट द रेजोल्यूशन कैन बी प्रोवाइडेड अर्ली एंड the disputes, if it is a possibility, get resolved within 120 days from the date of commencement of pre-pack insolvency proceedings. So resolution plans shall be submitted as approved by COC to the adjudicating authority under section 54K within 90 days. So इसको ऐसे देखना चाहिए, 90 days मिलता है committee of creditors को, or another 30 days will be provided to the adjudicating authority to close the proceedings and deliver an order. So this is how the whole structure is made. Where no resolution plan is approved by the committee of creditor within 90 days, PPIRP shall expire after the end of the 90 days and a termination order will be passed by the adjudicating authority. Declaration of moratorium and public announcement during the PPIRP. अब ये बेसिक प्रोविजन 54E में दिया हुआ है, ये प्रोविजन दोनों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कॉमन है. So if any person is going under corporate insolvency proceedings under section 7, 9 और 10, और अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जा रहा है सेक्शन 54 के प्री पैक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में, दोनों केस में ये चीजें होनी अनिवार्य है. दिस इज मैंडेटरी टू हैपन. Declaration of moratorium and public announcement during PPIRP pre-pack insolvency. The adjudicating authority shall on the PPICD along with the order of admission under section 54C declare a moratorium period. Moratorium period वो समय है जिस समय PPIRP की प्रोसीडिंग्स चल रही है और उस समय इसके ऊपर और इसके अगेंस्ट किसी भी तरीके के कोई प्रोसीडिंग्स नहीं किए जा सकते. तो इस बेस में किसके अगेंस्ट नहीं किए जा सकते? अगेंस्ट द कॉर्पोरेट. बट लेकिन अगर कॉर्पोरेट के अंदर उसके डायरेक्टर्स और अदर इंडिविजुअल्स के तौर पे देखे जाते हैं तो उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या सिविल प्रोसीडिंग्स की जा सकती है. लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक कॉर्पोरेट अगर PPIRP के प्रोसीजर्स में है और कॉर्पोरेट डेटर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है इस प्रोसेस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के इनिशिएशन के बाद, acceptance of PPIRP, once the PPIRP gets commenced, nobody can initiate any legal proceeding against the organization on the same line. Recovery is related. And other thing will be appointment of the resolution professional. इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना पड़ता है अगर हम कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जाते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए प्री पैक में हम जाते हैं, इन केस ऑफ प्री पैक इट इज अ मैंडेट टू गो अंडर एंड अपॉइंट डायरेक्टली अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रादर देन अपॉइंटिंग अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. एंड
वी हैव टू इनिशिएट अ पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट का प्रोसेस सिंपल है, एक कलोकियल लैंग्वेज में और एक इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर में हमें एक एडवर्टाइजमेंट देना होगा, ये कहते हुए कि ऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंसी में जा रही है, जो कि प्री पैक कैटेगरी की है, or if anybody who has interest and has outstanding and they are actually asking for their money from the organization can come to the insolvency professional office and register their name as corporate financial creditors or operational creditors with the records of insolvency professional. So public announcement में ये जा रहा होता है. And order of moratorium shall have effect from the date of such order till the date of PPIRP pre-pack insolvency comes to an end. थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास क्या पावर हो सकती है. अब यहां पे सेक्शन 54F में बात कर रहे हैं कि PPIRP, that is pre-pack insolvency, is accepted by the adjudicating authority. Once it is accepted, so what will happen and what all difference will it makes to the resolution professional as an individual and what powers does he gets if the application gets accepted. तो बेसिकली उससे पहले तो उसको मेक श्योर करना था कि एप्लीकेशन ठीक ठीक सही समय पे सही व्यक्ति को जा रही है जब वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसके रिकॉर्ड्स को कंपेयर करके हमारी एप्लीकेशन को चेक करेगा. ये सारे प्रोसीजर्स होते थे बिफोर एक्सेप्टिंग ऑफ द प्रीपैक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स. वंस द प्रीपैक इज कमेंस्ड, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास क्या पावर होगी. रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कंडक्ट PPIRP of the corporate debtor during the PPIRP period. Resolution professional shall perform the following duties. Confirm the list of claims. जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई जो बैलेंस शीट्स में दिखने वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनके पैसे बाकी हैं, उसके अलावा भी अगर कोई लोग आते हैं जो कि पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद आकर के उनको रिपोर्ट करते हैं तो उसकी लिस्ट को अपडेट करते रहना. He makes sure that the list of creditors gets updated and whatever claims are made in the balance sheet and otherwise are cross-verified against the records to the genuinity of the payment that they are claiming. Inform the creditors regarding their claims. They will initiate a letter informing all the creditors that there is a claim that they are getting outstanding in the books of the corporate debtors. Maintain an updated list of claim. Monitor management affairs of the corporate debtor. So there is a very significant difference in case of PPIRP, that is pre-pack, and regular corporate insolvency. The difference is in case of pre-pack insolvency, the management of the organization is not transferred to the corporate, to the insolvency professional. But in case of regular corporate insolvency, the board's power get defunct and the insolvency professional individually holds the complete power of board. So pre-pack के केस में जो मैनेजमेंट है वो स्टिल अपने ऑपरेशंस को खुद रन करेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उसे रन नहीं करेगा, लेकिन वो मॉनिटर करेगा कि उनके अफेयर्स ठीक ठीक से किए जा रहे हैं. अगर वो ठीक से उसको ऑपरेट नहीं करेंगे तो उनकी पावर्स को विड्रॉ करने का भी प्रोविजन है, जो कि अभी हम थोड़ी देर में आगे देखेंगे. Then eventually resolution professional will constitute a committee of creditor. Committee of creditors financial creditors की बनाई जाती है जिसमें फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इवेंचुअली होंगे. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, अदरवाइज कुछ केसेस में एक्सेप्शंस में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को भी मिलते हैं. और उसके बाद उनकी कमिटी को बनाने के बाद एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे जहां पे हम बाकी मैटर्स डिस्कस करेंगे. देन he will inform the committee of creditor in event of breach of any obligation by the board of director or partner, because initially you were mentioning that he is monitoring the operations, and prepare information memorandum on the basis of PIM submitted under section 54G and any other relevant information. तो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना करके वो सबमिट करेंगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को ताकि आगे के एक्शंस लिए जा सकें. File application for avoidance of transaction under section under chapter 3 or fraudulent and wrongful transaction trading under section chapter 4. किसी भी तरीके के ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिटर एंड स्टेक होल्डर्स को फ्रॉड किया जा सकता है उसको ट्रैक करना
एप्लीकेशन मार्क करना और उनको मेक श्योर करना कि ऐसे कोई इवेंट एग्जिस्ट ना करे, and such other duties as may be specified. So adjudicating authority or committee of creditors can in specific ask the insolvency professional, the resolution professional to cater other possible duties, and the resolution professional has to execute the same. Resolution professional shall exercise the following powers, namely access all BOA records and information available with the corporate debtors, access e-records of the corporate debtors from an information utility having financial information of the corporate debtors, access BOA records and other docs of the corporate debtors available with the government authority, statistical auditor, statutory auditors, accountant, and other persons, and attend meetings of the members, board of directors, and committee of directors or partners of the corporate debtors. He can appoint professionals like accountant, legal professional, and other professional in the manner as may be specified, and collect all information with respect to the asset, finances, and operation from the corporate debtors for determining financial position of the corporate debtors and existence of any avoidable transaction relating to. अब देखिए बेसिकली क्या है यहाँ पे ना, इसका काम क्या है, he is not मैनेजिंग द ऑपरेशंस बट ही इज मॉनिटरिंग द ऑपरेशंस. तो मॉनिटरिंग से रिलेटेड उनके पास क्या होगा कि वो बोर्ड के जितने भी प्रोविजंस हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं, उसको कलेक्ट करेगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के साथ है उसको रिकॉर्ड करेगा, फिर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को कॉर्पोरेट डेटर्स के साथ अवेलेबल कराएगा जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के साथ है और बाकी लोगों के साथ है. मीटिंग कंडक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे प्रोफेशनल्स को ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एसेट्स और फाइनेंसेस की एंड ऑपरेशंस की, कॉर्पोरेट डेटर्स की, ताकि फाइनेंशियल पोजीशंस को रिकॉर्ड किया जा सके, एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस को, ऑफ एनी अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू business operations of the previous 2 years from the date of initiation of pre-pack insolvency, financial and operational payments for the period previous to 2 years from the date of pre-pack insolvency, list of assets and liability as on the initiation date, and such other manner as may be specified. इसके अलावा take such other actions as may be specified. उनको अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होगा तो वो सारे वो काम एग्जीक्यूट करेंगे. So financial institution maintaining account of the corporate debtor shall furnish information to the corporate debtor with respect to the corporate debtors to the resolution professional as required by him. All professional of the corporate debtors, its promoters, and other professional person associated with its management shall extend assistance to the cooperation of the resolution professional to perform his duties and exercise power under section 19(2) and 3 of mutual mutandis to apply. तो ये बेसिकली क्या है कि इनके सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग पोजीशन होल्डर हैं वो उनको कोऑपरेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी ड्यूटीज को ठीक से मॉनिटर कर सके या एग्जीक्यूट कर सके. ठीक. Fee of the resolution professional and any expenses incurred by him for pre-pack insolvency shall be determined in such manner as may be specified. तो फीस वो बेसिकली रूल्स में दे रखे होते हैं कि कैसे कैसे सिचुएशन में उनकी क्या फीस होती है. Provided further that committee of creditor may impose limitation and condition on such fees and expenses. तो committee of creditors अगर चाहे तो उसके ऊपर कुछ कंडीशंस इंपोज कर सकती है कि उसकी फीस को कैसे कैसे करना है. Moreover, the fees and expenses for the period prior to constitution of the committee of creditors shall be subject to ratification by it. So committee of creditor formation के पहले जो भी खर्चे हुए हैं उसको COC ratify करेगा, मतलब वो कहेगा कि हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद वो हमारी इनिशियल कॉस्ट में कवर अप हो जाएगा. The fee and expenses referred to in subsection 6 shall be borne in such manner as may be specified. List of claims and preliminary information memorandums, इसके बारे में हम बात करते हैं सेक्शन 54G में. हमारे पास अभी ये काफी सारे प्रोविजंस हैं और अगर मैं बीच बीच में इसमें डिस्कशन नहीं लेते या ब्लॉक करते हैं तो बहुत ही टेक्निकल है और कई बार अगर वो हम रिलेट नहीं कर पाते इट कैन इवेंचुअली गेट बोरिंग. सो आई जस्ट मेक श्योर दैट वी टेक सम गैप्स एंड इफ वी वांट वी कैन इनिशियली टेक सम क्वेश्चंस आल्सो. I think it can be only done through the chat bot.
सो हम जस्ट कंटिन्यूइंग, अभी हमारे पास 54G के बाद GHIJKLMNO 9 प्रोविजन इसके पास रह जाते हैं जो हमें अभी डिस्कस करने हैं, एंड उससे जाकर के हम प्री पैक इंसॉल्वेंसी को पूरा कवर अप करते हैं. सो लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम्स, इसकी एक लिस्ट तैयार करी जाएगी जिसका डिफिनेशन, जिसके प्रोविजंस और उसकी डिटेल्स दी गई है सेक्शन 54G में. द कॉर्पोरेट डेटर शैल विद इन 2 days ऑफ ICD submit to the resolution professional following updated information, namely a list of claims along with the details in respect of creditors, their section, interest, guarantees, and a preliminary information memorandum containing information relevant for formation of resolution plan. तो क्लेम्स की इंफॉर्मेशन और बेसिक इंफॉर्मेशन, ताकि रेजोल्यूशन प्लान बनाया जा सके, ये सारी इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी कॉर्पोरेट डेटर की होती है. कॉर्पोरेट डेटर का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्री पैक इंसॉल्वेंसी में जा रहा है. हमारे इनिशियल एग्जांपल में ABC लिमिटेड, वेयर एनी पर्सन हैज substantiated any loss or damage as a consequence of the omission of any material information or inclusion of misleading information in the list of claims or the preliminary information memorandum submitted by the corporate debtor. Every person who is a promoter, director, partner of the corporate debtor at the time of submission of the list of claims or the preliminary information memorandum and has authorized the submission of the list of claim and information to the corporate debtor shall without prejudice to section 7A be liable to compensation to every person who has substantiated such loss or damage. अगर किसी भी तरीके का मिस इंफॉर्मेशन या मिस स्टेटमेंट किया गया तो प्रमोटर, डायरेक्टर, पार्टनर या वो लोग जिन्होंने इस सबमिशन को ऑथराइज किया है, सब इसके लिए लाइबल होंगे लॉस के अगेंस्ट पेमेंट करने के लिए. No person shall be liable if the list of claim of or preliminary information memorandum was submitted by the corporate debtors who is knowledge or with the consent and his knowledge and consent. Subject to section 54E, such person who substantiated any loss, damage shall also be entitled to move to the court having jurisdiction for seeking compensation for such loss or damage. अगर किसी बंदे को इसके प्रोसेस में क्लेम्स की स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की वजह से अगर लॉस इनकर करना पड़ता है तो ही कैन गो टू द कोर्ट आस्किंग फॉर द डैमेज टुवर्ड्स व्हाट द लॉस दे हैव इनकर्ड. During the PPIRP period, management of affairs are defined under section 54H. The management of affairs of the corporate debtor shall continue to vest in the board of director and the partner of the corporate debtor. अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको बात में डिस्कस किया था. अगर मान लीजिए कि हमने प्रीपैक इंसॉल्वेंसी में गए हैं तो उसके ऑपरेशंस और मैनेजमेंट की सारी पावर बोर्ड के पास ही रहेगी, एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास केवल मॉनिटरिंग का काम रहेगा. आगे जाकर के कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हम उनकी पावर्स को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ट्रांसफर कर देते हैं. We'll come to that. So the management of affairs of the corporate debtor shall continue to vest with the board of director and partner. अगर corporate insolvency proceeding 7, 9 and 10 की जो शुरुआत में हमने बात करी थी वो होती है, तो उस केस में सारी की सारी बोर्ड की या पार्टनर्स की पावर चली जाती है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, हमारे केस में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को. लेकिन अगर प्री पैक में एमएसएमई अप्लाई करते हैं तो उस केस में वो पावर्स बोर्ड के या पार्टनर के पास ही रहती है और हमारे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास केवल मॉनिटरिंग के साथ उसके ऑपरेशंस को असिस्ट करने का काम रहता है. बट बोर्ड को मैनेज करने या ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का सारा काम बोर्ड के पास और पार्टनर के पास ही रह जाता है. ये एक और बेनिफिट है प्रीपैक इंसॉल्वेंसी का. बोर्ड एंड डायरेक्टर एंड पार्टनर शैल प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मैनेज इट्स ऑपरेशंस एज अ गोइंग कंसर्न. And promoter members, personals and partner, as the case may be of the corporate debtor, shall exercise and discharge their contractual and statutory rights and obligation in respects to the corporate debtor subject to provision of this chapter.
सो वो जैसे काम कर रहे थे मेक श्योर करेंगे कि गोइंग कंसर्न चलती रहे और अपनी ऑपरेशंस को, अपने डिस्चार्ज जितने भी रिलेटेड काम है उनको समय समय पे ठीक ठीक तरीके से वो अपने काम को एग्जीक्यूट करते चले। सेक्शन 54I, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ये बेसिकली सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होगी इस प्रोसीजर्स में। ये वो लोग होंगे जो कि डिसीजन मेकिंग की पावर होल्ड करेंगे। ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने पैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट डेटर्स के साथ लगाए हैं और जो अपने पैसे को वापस रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन होते हैं उसको डिफाइन किया जाता है सेक्शन 54I में। Resolution professional shall within 7 days of PPICD constitute the committee of creditor based on list of claims confirmed under section 54F, provided that the compensation of committee of creditors shall be altered based on the updated list of claims, and such alteration shall not affect the validity of any past decisions of the committee of creditor. First meeting of committee of creditor has to be held within 7 days of its constitution. And provisions of section 21 except 21(1) thereof shall be mutandis apply with the committee of creditors of this chapter. So committee of creditors की पावर सेक्शन 21 में डिफाइंड है और उसमें 21 के जितने भी प्रोविजंस हैं सारे एप्लीकेबल होंगे एक्सेप्ट टू सेक्शन 21(1). तो हम डिटेल में नहीं जाते टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। तो कहना ये चाह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का लिस्ट क्लेम होने से हमें एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर का फॉर्मेशन करना है और पहली मीटिंग 7 दिन के अंदर अंदर कंडक्ट कर लेनी है। ऐसा हो सकता है कि किसी सर्टेन कंडीशन में कॉर्पोरेट डेटर्स की जगह रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ऑपरेशन की और मैनेजमेंट की पावर ट्रांसफर हो जाए। वो क्या हो सकता है? वो ऐसा हो सकता है कि मिसमैनेजमेंट रिकॉर्ड हो या किसी तरीके का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अगर रिकॉर्ड होता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, पार्टनर से उनकी मैनेजिंग पावर्स को लेकर के और वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को पास ऑन करता है। तो प्रोविजन सेज वेयर द कमिटी ऑफ क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ PPIRP by a voting of 66% or more of voting share resolve that to vest the management of corporate debtors to resolution professional. The resolution professional shall make application in regard to the adjudicating authority in such form as may be specified. So committee of creditors भी कह सकता है कि we don't want the directors or the partners to operate the organization and resolution professional to operate, but in that case COC will pass a vote by 66% or more of the complete voting share, and then resolution professional will apply with the adjudicating authority to pass on the managing power with the resolution professional. Other case would be जैसे मैंने पहले बताया, अगर अफेयर्स में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज आइडेंटिफाई होती है या देयर इज समथिंग दैट इज ग्रॉसली मिसमैनेजमेंट, सो इस केस में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास पावर ट्रांसफर हो जाती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास इसको फॉरवर्ड करने की पावर होती है। सो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमारे केस में एनसीएलटी एंड डीआरटी, एनसीएलटी को कवर करते हैं। सो एनसीएलटी विल से दैट नाउ द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल वेस्ट विद द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड नॉट विद द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, अब बेसिकली ये इसका हार्ट है रेजोल्यूशन प्रोविजन का। बेसिक यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये वो सारे प्रोविजंस हैं दैट विल मेक श्योर दैट द resolution provisions and pre-pack insolvency is actually executed, and what are the key areas that has to be taken care of. So resolution plan एक ऐसा प्लान है वो ये कहता है कि organization will be revived taking the following steps and actions. So resolution plan को तैयार करना, फिर उसको कंपेयर करके अप्रूव करना और फिर उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड करना। दीज आर सर्टेन स्टेप्स दैट हैज टू बी टेकन केयर, एंड इफ द रेजोल्यूशन प्लान गेट्स अप्रूवल, the pre-pack insolvency resolution process gets finalized, and if it is not approved then PPIRP gets discontinued and eventually the organization will go into CIRP in certain cases, मतलब regular insolvency, और otherwise adjudicating authority can say कि organization को liquidate कर दिया जाए, मायने
उनके एसेट सेल करके उससे जो भी पैसे निकलेंगे वो जितने भी लोग जिनको पैसे देने बाकी थे उनको दे दिया जाए. So resolution plan approve होना is the heart of any resolution provisioning. So the provision says under section 54K, considerations and approval of resolution plan, corporate debtor shall submit the base resolution plan to resolution professional. कॉर्पोरेट डेटर मतलब द कंपनी एबीसी लिमिटेड एक रेजोल्यूशन प्लान बना करके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को देगी 2 दिन के अंदर ऑफ इनिशिएशन ऑफ resolution proceedings, and the resolution professional shall present it to the committee of creditor. The committee of creditor may provide corporate debtor an opportunity to revise the base resolution plan prior to the approval or invitation of PRA. So it can ask for other resolution plans as well. So या तो वो ये कहेगी रिवाइज करे या वो अदरवाइज कुछ रेजोल्यूशन प्लान्स के लिए भी सीख कर सकते हैं. रेजोल्यूशन प्लान एंड बेस रेजोल्यूशन प्लान submitted under this section shall conform to requirements of section 31 and 32 of the provision, and 31, 2 and 5 shall mutandis apply to the proceedings under chapter. Okay. And the committee of creditor may approve base resolution plan for submission of adjudicating authority if it does not impair any claims owned by the corporate debtors to operational creditors. Where the committee of creditors does not approve the base resolution plan under subsection 4, the base resolution plan impairs any claim owned by the committee of corporate debtors to the operational creditors, the resolution professional shall invite prospect resolution plans to submit a resolution plan to compete with the base resolution plan in such manner as specified. The resolution applicant, not prospect resolution applicant, ऐसे लोग जो कि कॉर्पोरेट डेटर्स के अलावा भी उस ऑर्गेनाइजेशन को ओवरटेक करना चाहते हैं और उसको रन करना चाहते हैं, उनसे भी रेजोल्यूशन प्लान मांगा जाएगा अगर जो हमारा बेस रेजोल्यूशन प्लान ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट ने खुद दिया है उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव नहीं करता. तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिटिंग रेजोल्यूशन प्लान pursuant to the invitation shall fulfill such criteria as may be laid down by the resolution professional with approval of committee of creditors having regard to the complexity and scale of the business operation of the corporate debtors and other conditions. So हम alternate resolution plans भी मांगेंगे resolution applicant से, वो लोग जो कि चाहते हैं कि existing management के अलावा कोई दूसरा उसको overtake कर ले जाए. The resolution plan shall provide to the resolution applicant the basis of evaluation of resolution plan for the purpose of section 9, subsection 9 of committee of creditors and relevant information referred to in section 29 which shall apply accordingly. Resolution professional shall present to committee of creditors for evaluation resolution plan which conforms to the requirement of section 32. यहाँ पे हमारे और प्रोविजंस हैं जिसको अभी हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाएंगे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से. मोटा मोटा ये कि उसमें पूछा जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज और किन कंडीशंस को फॉलो करके हम रेजोल्यूशन प्लान के अलावा भी ऑल्टरनेटिव प्लान्स को कंसिडर कर सकते हैं. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल इवैल्यूएट द रेजोल्यूशन प्लान प्रेजेंटेड एंड सेलेक्ट अ रिवाइज्ड रेजोल्यूशन प्लान फ्रॉम अमंगस्ट देम, and where on the basis of criteria laid down by it, the committee of creditors shall that the revised resolution plan selected under subsection 9 is significantly better than the base resolution plan, and the revised resolution plan may be selected from the approval under subsection 12. So अगर मान लीजिए कि किसी बंदे ने अप्रूवल बेस रेजोल्यूशन प्लान दिया 10 करोड़ रुपए का एंड हमारे पास ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन प्लान आ जाता है 50 करोड़ रुपीस का, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बिना वो 10 करोड़ रुपीस वाले ऑर्गेनाइजेशन प्लान रेजोल्यूशन प्लान को कंसिडर किए डायरेक्टली जो ऑल्टरनेटिव प्लान आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेगा. लेकिन अगर मार्जिनल डिफरेंस है तो दे विल ask the corporate debtors to revise their resolution plan and provide a better alternative resolution plan so that their management can be kept with themselves if it is a possibility. Where there is a revised resolution plan under subsection 9, it is not considered for approval or does not fulfill the requirement under subsection 10, it shall compete with the base resolution plan. One of them shall be selected for approval under subsection 12.
Resolution plan selected for approval under subsection 10 or 11 may be approved by committee of creditor for submission to the adjudicating authority. In case where the revised resolution plan selected for the approval under subsection 11 is not approved by the committee of creditor, the resolution plan to file for the termination of the PPIRP in the manner specified. अब मान लीजिए कि जो रेजोल्यूशन प्लान कॉर्पोरेट डेटर ने दिया या हमारे पास प्रोस्पेक्ट रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने दिया, और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के दिए हुए प्लान भी और बेस रेजोल्यूशन प्लान जो सीडी से आया था वो दोनों ही हम अप्रूव नहीं कर पाए कमिटी ऑफ क्रेडिटर, तो हमारी प्री पैक इंसॉल्वेंसी के प्रोसीजर को टर्मिनेट करने के लिए प्रोसीड करना पड़ेगा और इवेंचुअली हम टर्मिनेशन फाइल करके इसको डिसकंटिन्यू करेंगे एंड आगे के प्रोसेस में जाते हैं। फिर the approval of revised resolution plan under subsection 4 or subsection 12 by the committee of creditors shall be voted by more than 66% or equal to the vote of sharing after considering the feasibility and viability and the manner of distribution proposed and order of priority under section 53(1). सो अप्रूवल के बाद हम देखेंगे इसको अप्रूव करने के लिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर को 66% या उससे ज्यादा की वोटिंग शेयर से अप्रूवल देना पड़ेगा और उसके बाद उसमें देखा जाएगा कि उसकी मैनर ऑफ प्रायोरिटी, फिजिबिलिटी एंड विएबिलिटी क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोपोर्शन कैसे है। While considering the feasibility and viability of resolution plan submitted by the corporate debtors provided for impairment of any claim owned by the corporate debtor, committee of creditor may require promoter and the corporate debtors to dilute their shareholding, voting control and rights in the corporate debtors, provided that where the revised resolution plan does not provide for such dilution, corporate committee of creditors shall, prior to the approval of such resolution plan, record reason for its approval. अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट डेटर्स जो XYZ कंपनी है उसके मैनेजमेंट का ही कोई एक लोन है या कोई एक क्लेम है जो कि एग्जिस्ट करता है, तो उसका इम्पेयरमेंट किया जाएगा, मतलब उसको वहां से रिमूव करना होगा। और अगर नहीं करते हैं इम्पेयरमेंट तो उस केस में उसको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि इसको हम क्यों रिमूव नहीं कर रहे हैं। 15, the resolution plan shall submit a resolution professional shall submit a revised resolution plan as approved by the committee of creditor to the adjudicating authority. एक बार वो रेजोल्यूशन प्लान कमिटी ऑफ क्रेडिटर से अप्रूव हो गया तो इवेंचुअली दैट विल गो टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर अप्रूवल। इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूव्स द रेजोल्यूशन प्लान, द प्रपोजल ऑफ प्री पैक रेजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी गेट्स एक्सेप्टेड, और अगर वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मना कर देती है तो उस केस में वो रिजेक्शन में चला जाएगा और इवेंचुअली इसको डाइल्यूशन में जाना पड़ेगा। इट इज hereby certified that the corporate clarified that the corporate debtors bearing RA under section 5 of subsection 25 may submit base resolution plan either individually or jointly with the other person. For the purposes of subsection 4 and 14, claims such shall be considered to be impaired where R plan does not provide for full payment and of the confirmed claims as per updated list of claims maintained by the resolution professional. So अगर पूरे के पूरे पैसे नहीं दे पाते तो पार्ट में उस पैसे के क्लेम को देना होगा और बचे हुए पैसे को वहां से इनको हेयर कट लेना पड़ेगा। अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सो एक बार अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने इसको अप्रूव कर दिया तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसको अप्रूव करने के लिए भेजा जाएगा और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर इसे अप्रूव कर देती है तो हमारा प्लान एक्सेप्ट हो जाएगा। इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज सैटिस्फाइड दैट द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स रेजोल्यूशन प्लान as required shall within 30 days of the receipt of the resolution plan pass an order to approve it. Adjudicating authority before approving the auditor's order satisfy itself that the resolution plan provided for effective implementation. तो adjudicating authority ये देखेगी जो committee of creditors का resolution plan है वो ठीक ठीक implement हो सकता है तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर approve कर देगी। The approval of the order shall have effect from under section 31(1)(3)(4) and apply provisions mutuandis mutandis. तो जो वहां पे उनके प्रोविजंस दे रखे हैं यहाँ पे प्री पैक के लिए भी एप्लीकेबल होंगे सेक्शन 54 के अंदर। Where adjudicating authority satisfied the revised resolution plan does not confirms within 30 days वो रिजेक्ट कर देगी और ऑर्डर पास करेगा सेक्शन 54(n) पे। रिजेक्शन हो जाएगा तो इवेंचुअली डाइल्यूशन और लिक्विडेशन के प्रोसेस में जाना होगा। Notwithstanding anything contrary contained in this section, the adjudicating authority may pass order under section 54(j)(2) and the resolution plan approved by the committee of creditor
Section 54K does not result in the change in management and control of the corporate debtors or to a person who was not a promoter or a management and control in the corporate debtor. The adjudicating authority shall pass an order to reject and termination of the PPIRP, passing a liquidation order as a section 33 and declaring the PPIRP cost shall be included in the cost of liquidation. तो अगर मान लीजिए ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये रियलाइज करती है कि इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उस केस में उसको रिजेक्ट कर देगी, टर्मिनेशन कर देगी प्रीपैक इंसॉल्वेंसी का, और लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर देगी सेक्शन 33 में, और जो प्रीपैक इंसॉल्वेंसी की जो कॉस्ट थी उसको लिक्विडेशन की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा ताकि इसके पैसे भी वो टाइमली रिकवर कर सके, पे कर सके। एनी अपील अगेंस्ट द ऑर्डर अप्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 54L शैल बी ऑन द ग्राउंड लेड डाउन अंडर सेक्शन 61(3). तो अगर आप हमारे अप्रूविंग ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में कोई अपील डालना चाहते हैं तो सेक्शन 61(3) के ग्राउंड्स पे अपील फर्दर की जा सकती है, इसका प्रोविजन दिया हुआ है। एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रीपैक इंसॉल्वेंसी, टर्मिनेशन के प्रोविजंस क्या कहते हैं? वेयर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फाइल्स एन एप्लीकेशन विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रीपैक इंसॉल्वेंसी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54K12 and under section 54D3, the adjudicating authority within 30 days of the date of application shall terminate and provide manner of constitution of proceeding initiated for avoidable transaction if any. तो अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देता है टर्मिनेशन के लिए प्रीपैक इंसॉल्वेंसी का प्रोविजन 54K12 और 54D3 के अंदर, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 30 दिन के अंदर अंदर या तो टर्मिनेशन दे देगी और उसके अलावा प्रोवाइड करेगी मैनर कॉन्स्टिट्यूशन का अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कही है कर दो। वेयर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एट द टाइम बिफोर अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान इंटीमेट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी of decision of committee of creditor with more than or equal to 66% of the shares to terminate the prepack resolution process, the adjudicating authority shall pass the order under subsection 1. तो अगर 66% से कमिटी ऑफ क्रेडिटर का डिसीजन होता है तो ऊपर भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्रीपैक इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर्स को टर्मिनेट करने का ऑर्डर पास कर सकती है। वेयर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पासेस द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, द कॉर्पोरेट डेटर शैल बेयर द प्रीपैक इंसॉल्वेंसी कॉस्ट। तो जो कंपनी एबीसी लिमिटेड थी जो कि कॉर्पोरेट डेटर है उसको उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी अगर प्रीपैक इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर टर्मिनेशन कहा जाता है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 54J2 and prepack insolvency resolution procedure is required to be terminated. The adjudicating authority shall pass an order of liquidation in respect to the corporate debtor under section 33 and declare the prepack insolvency cost forming part of the liquidation cost. तो इवेंचुअली इसमें भी यही होगा कि अगर हमारी ये ऑर्डर पास होता है कि प्रीपैक इंसॉल्वेंसी हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो लिक्विडेशन का ऑर्डर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एसेट सेल करके वैल्यू रिकवर करने का ऑर्डर पास करेंगे और जो हमने प्री पैक में खर्चे किए हैं वो सारे के सारे खर्चे लिक्विडेशन की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे ताकि वहां लिक्विडेशन से इसके पैसे को पे किया जा सके। हमारे पास ये फाइनल प्रोविजन आ गया है, इसके बाद हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। और लास्ट प्रोविजन जो हमारा है वो होता है initiation of CIRP, corporate insolvency resolution process, in continuation to pre-pack insolvency. अगर मान लीजिए प्री-पैक को इनिशिएट करने के बाद और अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान के पहले अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर 66% से ऊपर या उसके बराबर का वोट करते हैं कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी को चैप्टर 2 में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इंटीमेट करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि अगले 30 दिन के अंदर प्री पैक को टर्मिनेट करके कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी को इनिशिएट कर दिया जाए। सो हाउ टू रीड दिस इन द लीगल वे? द लीगल लैंग्वेज सेज द कमिटी ऑफ क्रेडिटर एट एनी टाइम आफ्टर द PPICD but before the approval of resolution plan
by vote of 66% or more may resolve to initiate corporate insolvency resolution process in respect of corporate debtors if corporate debtor is eligible under say chapter 2. So eligibility क्या होती है? हमारा प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में एनी कॉर्पोरेट डेटर फाइनेंशियल क्रेडिटर के क्लेम 10 लाख रुपए या उससे अधिक के होने पे हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं पीपीआईआरपी के। लेकिन सीआईआरपी मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मतलब फुल इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स पे जाने के लिए हमारा जो आउटस्टैंडिंग क्लेम हो वो कंसोलिडेटेड तौर पे 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक का होना चाहिए, तभी इसको इनिशिएट किया जा सकता है। सो where the resolution professional intimate the adjudicating authority of such decision of committee of creditor, adjudicating authority shall within 30 days of the intimation pass an order to terminate the PPIRP and initiate a corporate insolvency resolution process. Then they will appoint a resolution professional under PPIRP as IRP interim resolution professional सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ द रिटन कंसेंट। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी और ये केवल इंटरिम तौर पे होगा। ये हो सकता है कि इसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पे कंटिन्यू भी किया जाए, या ये भी हो सकता है कि दे कमिटी ऑफ क्रेडिटर कैन अपॉइंट समबडी अदर देन द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज CIRP. Declaration that PPIRP cost, if any, shall be included in insolvency resolution proceedings cost for the purpose of CIRP. Where resolution professional fails to submit written consent, adjudicating authority shall appoint a interim resolution professional by making reference to the board under section 16. बोर्ड से यहाँ पे मतलब होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मतलब नहीं है। तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आईबीसी में जो एम्पैनल लोग हैं उसके बोर्ड में से जाकर से वहां से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को आइडेंटिफाई करवाएगी और फिर वो यहाँ पे आके एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल काम करेगा। Where the adjudicating authority passes an order under subsection 2, such order shall be deemed to be an order of admission of the application under section 7. Section 7 में बोलता है फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। सो अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करता है, ये माना जाएगा कि ये फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा इंसॉल्वेंसी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया गया है। And CIRP shall commence from the date of such order. The proceeding initiated for avoidable transaction shall continue during CIRP. For the purpose of section 43, 46, 50, reference to ICD shall means pre-packed ICD, and in computing relevant time, the period avoidable transaction and during the PPIRP shall be included. So, हम अगर मान लेते हैं कि प्री पैक इंसॉल्वेंसी को चेंज कर दिया गया कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडर्स में, तो जो हमने टाइम ऑलरेडी यहाँ पे एंगेज कर लिया है तो वो सारे टाइम को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा ओवरऑल पीरियड को कंसिडर करने के लिए, जो कि उस केस में 180 डेज प्लस एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज होता है। और प्री पैक इंसॉल्वेंसी को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसीज में कन्वर्ट करके आगे बढ़ा जाएगा एंड फिर वो सारे के सारे प्रोसीडिंग अदरवाइज होंगे। अगर रिजेक्ट होता है तो लिक्विडेशन में जाकर के एसेट सेल करते हैं और हम अपने रेगुलर प्रोसीजर्स में उन एसेट्स जो पैसे मिलते हैं उसमें जितने भी डेटर्स कॉर्पोरेट क्रेडिटर्स हैं, जिसमें फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, उनके पेमेंट करते हैं। दैट्स इट फॉर द प्रेजेंटेशन पार्ट। इसके बाद हमारी तरफ से थैंक यू। What else that we can talk about? There can be a lot of possibilities. I don't know how comfortable you people are, because ये काफी भारी भरकम टॉपिक है बात करने के लिए। मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बात कर सकते हैं। एंड स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन। जी, हेलो Sir, we have few questions. प्लीज सर, प्लीज। Sovna ma'am. Yes, am I audible? एब्सोल्युटली, प्लीज। Yes, sir. It was a very refreshing session. I'll just go with cautions. First is, what is minimum default amount required for an MSME to initiate PPIRP under the Insolvency and Bankruptcy Code? So minimum default amount, as I mentioned in between, the minimum default amount is rupees 10 lakh. So if an organization is a corporate debtor with
MSME registrations. So MSME corporate debtors, if comes under a default of rupees 10 lakh and above, they can initiate a proceedings under PPIRP, pre-pack insolvency resolution process. In comparison to that, अगर रेगुलर प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब मान लीजिए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसीज के रेगुलर केसेस होते हैं, तो वहां पे जो थ्रेशोल्ड नंबर है वो 1 करोड़ रुपीस है. लेकिन अगर मान लीजिए एक एमएसएमई कॉर्पोरेट एमएसएमई है, तो वो 10 लाख रुपीस के भी वैल्यू के ऊपर इंसॉल्वेंसीज में जा सकते हैं, जो कि प्री पैक में होगा. Okay. जी. So let's go to second question. Which category of MSME as per MSME Act classification is eligible for initiating PPIRP? Everybody who can be classified as a corporate MSME can go under PPIRP. So who can be considered as corporate MSME? Anybody who is registered with Ministry of Corporate Affairs, and in those category who can be possible prospects, companies and LLP. और companies and LLP cases में अगर MSME registration exist करेगा तभी possible होगा, otherwise ये करना possible नहीं होगा. All right. Thank you for that, sir. Going to next question. What are the disqualification conditions under Section 29A applicable to PPIRP? मैम वो सारे कंडीशंस और क्वालिफिकेशंस मुझे अलग से निकालने पड़ेंगे. अगर ये कहेंगे तो मैं इनको अदरवाइज इसको आंसर कर दूंगा, बिकॉज आई हैव टू गो थ्रू द स्पेसिफिक प्रोविजंस इन स्पेसिफिक. So we can do it all right in a different session. Yeah. Okay. All right. So we have noted this and we can consider for next session. Second question is any information memorandum required at the time of filing PPIRP? Absolutely. At the time of filing PPIRP, information memorandum and list of creditors are the two things that are supposed to be filed. So information memorandum is a base document that is initiated and is forwarded to the adjudicating authority to accept this application. So information memorandum में details क्या क्या हो सकते हैं? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के फॉर्मेशन के पहले लिस्ट ऑफ डिटेल क्रेडिटर्स, और उसके अलावा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हो सकता है पॉसिबली, जैसे कि कंटिजेंट इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि कोई एक इवेंट होने वाला हो और हमारे ऊपर अभी पैसे कोई लाइबिलिटी जनरेट नहीं हुई है, तो उसकी इंफॉर्मेशन, या अदरवाइज हमारे पास कोई एक एसेट्स है जो कि हमारे पास वे अपोजिट हमने क्लेम कर रखे हैं लेकिन हमें नहीं मिले, तो वो भी कंपनी एसेट्स में आने चाहिए. तो इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि हमें उसके लिए प्रिपेयर करनी होती है एप्लीकेशन के टाइम पे. All right. Thank you for that, sir. There's a next question which says we are a government company and board has no powers to write off as per order by Department of Expenditure. In such a case, if there is NCLT order with haircut, how to account for? Please advise. आप एक बार क्वेश्चन फिर से बोलेंगे प्लीज, मैं मिस कर रहा हूँ. Sure. We are a government company and board has no power to write off. Okay. As per order by Department of Expenditure. Okay. In such a case, if there is NCLT order with a haircut, how to account for? Please advise. देखिए, बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी हो या किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि इस प्रोसीजर्स में कवर अप होती है, और अगर एनसीएलटी का ऑर्डर है, एनसीएलटी का मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सो अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर है कि हेयर कट करना है, तो उस केस में जो भी हमारा राइट ऑफ होगा उसको बुक कैसे करेंगे? हम उसे इनकम साइड पे बुक करेंगे कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये लाइबिलिटी अभी पे करनी थी जो नहीं पे करनी है, तो उतनी वैल्यू से हमारी लाइबिलिटी जो रिड्यूस हुई है उसको इनकम में बुक करना पड़ेगा, और उतनी वैल्यूज की जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में होगी उसको वहां से रिड्यूस करना पड़ेगा. एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अकाउंट फॉर. और उसके टेक्निकल टर्म्स में हमें ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन को जो कि स्पेशल इवेंट में होते हैं उसमें होते समय ये रेफरेंस नोट में मेंशन करना पड़ेगा, और उसकी ट्रांजैक्शन एंट्री में भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर है
उसको वहां पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि इस ऑर्डर के बेसिस पे ये एंट्री या ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। बिकॉज इफ समथिंग दैट द कंपनी वाज सपोज टू पे फॉर, अब वो नहीं पे कर रही है, तो वो इनडायरेक्ट वे में उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम के तौर पे बुक करना पड़ेगा। तो वो उनकी बुक्स में जाकर के एक इनकम शो करेगी एंड देयर विल बी अ रिडक्शन, a haircut in the liability side. This is how they are supposed to account for. Oh, thank you for that, sir. Next question is, what is the maximum duration allowed to complete PPIRP once it is admitted by NCLT? Okay. देखिए बेसिकली इसको ना दो तरीके से बताना चाहिए। जो ऑफिशियल नंबर है वो होता है 120 डेज, ठीक है। 120 डेज के बाद भी 45 डेज का एक एक्सटेंशन मिल जाता है। तो 120 डेज प्लस 45 डेज इन सर्टेन सिनेरियोस, ये होती है ड्यूरेशन। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल सिनेरियोज में क्या हो रहा है, और अभी बहुत सारे जो इंसॉल्वेंसी के प्रोसीजर्स चल रहे हैं, पीपीआईआरपी या अदरवाइज भी, तो उसमें हो क्या रहा है कि जो टाइम टेकन है वो कोर्ट ऑर्डर्स और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से ये टाइम फ्रेम एक्सीड कर रहा है। तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकली हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो कानून इस तरीके से बनाया गया था कि 120 दिन के अंदर अंदर सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए थे पीपीआईआरपी में। लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ लीगैलिटीज, डिस्प्यूट्स एंड हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, ये टाइम कई बार इंक्रीज भी हो जाता है, और वो एक अनसर्टेन पीरियड के लिए इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर हमारे लिए या हमारे अगेंस्ट नहीं आ जाता, तब तक उस प्रोसीडिंग्स को माना जाता है कि हमने उसको एक्सटेंशन में वैल्यू मतलब ड्यूरिंग ड्यूरेशन में इंक्लूड नहीं किया है। ऑफिशियल टर्म्स में 120 डेज। All right, sir, for giving that details. There's next question, which is, what actions are restricted for management during the PPIRP period? Okay, what actions are restricted during PPIRP period? So For the management. फॉर द मैनेजमेंट, वो किसी भी तरीके की एडिशनल लाइबिलिटी नहीं जनरेट कर सकते जो कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के बाहर हो, पहला। दूसरी चीज ये कि वो अपने लिए किसी भी तरीके की फेवरेबल पोजीशंस नहीं ले सकते, ठीक है। पिछले 2 साल में होने वाले वो ट्रांजैक्शंस जो कि उनको अकाउंट फॉर कर रहे हैं और उनको किसी तरीके से फेवर कर रहे हैं, उसको रिपोर्ट करना होगा, और कई बार उनको इम्पेयर भी करना पड़ता है। सो मेक श्योर कि अगर किसी भी तरीके की इंसॉल्वेंसी के प्रोसीजर शुरू हो गए हैं, मे इट बी प्री पैक इंसॉल्वेंसी, फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी और रेगुलर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, इररिस्पेक्टिव कैसा भी हो, लेकिन मैनेजमेंट को ये मेक श्योर करना होगा कि हम इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के साथ किसी भी तरीके के कोई बेनिफिशियल पोजीशंस तो नहीं होल्ड कर रहे हैं, किसी भी तरीके का अनजस्ट पॉसिबिलिटीज तो नहीं आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। तो हमें उन सारी तरीके के जहां जहां पे उनको बेनिफिट्स आ रहे होते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। So such situations, we management cannot make position that are profitable to the management, और किसी भी तरीके की sensitive information को वो pass on नहीं कर सकते, वो भी उनके लिए restrictions में रहेगा। Okay, all right, sir. So moving ahead. शोभना जी, Yeah. एक चीज इसमें और बताना चाहेंगे, मतलब मेरे पास एक प्रेसिडेंस है। प्रेसिडेंस क्या होता है कि क्योंकि प्री पैक के केस में क्या होगा कि जो कॉर्पोरेट डेटर्स, मतलब द कंपनी इटसेल्फ कैन इनिशिएट द प्री पैक, तो ये पावर होती है। तो क्या हो सकता है कि ये प्लानिंग करके प्री पैक करने के लिए वो एक सर्टेन पीरियड के पहले जाकर के अपने फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी उनके पास पावर पोजीशंस में लोग हैं, उनको जाकर के ये पहले से बता दिया जाता है कि हम प्री पैक में जाने वाले हैं, और आप ये ऐसे होल्ड कर लो, यहाँ से एग्जिट कर जाओ, ये सारे बेनिफिट्स ले लो। सो अगर वो कभी भी स्क्रूटनी में आता है तो द मैनेजमेंट विल बी एब्सोल्युटली एलिजिबल and will be liable to pay for the losses of the people। ये स्पेसिफिकली प्रोविजन में है, और प्रैक्टिकल केस सिनेरियोज और कोर्ट केस के हमारे पास प्रेसिडेंट्स भी हैं जो कि इसको असिस्ट करते हैं या पर्टेन करते हैं। All right, thank you for that, sir. How does COC evaluate and approve the base resolution plan? देखिए बहुत सिंपल है। सीओसी कैसे इवेल्युएट करता है, वो सिंपल सा कॉल है। सीओसी का पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सीओसी का मतलब ये होता है कि वो लोग जिनके पैसे किसी भी तरीके से एक कॉर्पोरेट डेटर के साथ
फंसे हुए हैं, एंगेज्ड हैं। सो पहली चीज तो ये कि बेस रेजोल्यूशन प्लान के कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि बेस रेजोल्यूशन प्लान में क्या क्या चीजें कवर अप हो सकते हैं। अगर लेमैन के तौर पे समझे तो जिसके जिसके पैसे फंसे हुए हैं उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कि somebody is supposed to get 1 लाख रुपीज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका पूरा इंटेंट तो ये होगा ना कि उसके 1 लाख रुपए मैक्सिमम अमाउंट के उसको वापस हो जाए, उसको उससे ऊपर नहीं चाहिए, वो मिल भी नहीं सकता है। तो सीओसी विल मेक श्योर कि whatever resolution plans are submitted, the resolution plan that allows the maximum recovery and security of their funds will be shortlisted and will be approved eventually. All right, sir. So, one more question regarding COCs. What voting percentage is आपकी आवाज ब्रेक हो रही required by है मैम, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, कैन यू जस्ट Shobna ma'am, your COC for Shobna ma'am, your approval voice is of the? breaking. Can you please repeat that question to I, Shobna ma'am? Actually, your voice is breaking. am I audible now? Am मच I बेटर audible? प्लीज? Yes, yes, yes. Okay. So there is one more question on COC, which is what voting percentage is required by COC for approval of the final resolution plan? 66%. Okay. So final resolution plan, the committee of creditor has to vote by 66% or more. If they pass a resolution by 66% or more, the resolution plan gets approved. If it is under 66%, it gets rejected, and eventually pre-pack has to go into liquidation eventually. All right, sir. Yeah. So the last question is, how are claims of operational creditors treated in PAPIRP? Okay, this is one very interesting question. I would say this is one of the most interesting question to be talked about. So मैंने ना बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन में स्किप कर रखी थी, क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे हमने कोशिश किया था कि सारे प्रोविजन हम कवर कर सके, तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें नहीं यहाँ पे डिस्कस हुई। सो अभी इन्होंने जो बोला उसको ऐसे देखना चाहिए कि we are talking about committee of creditors, and we should consider creditors in two categories: operational creditors and financial creditors. So financial creditors and operational creditors can be identified. Financial creditors वो लोग हुए जिन्होंने अलग से पैसे दिए हैं और उनके पेमेंट्स बुक्स में रिकॉर्डेड है या अदरवाइज क्लेम्स है। और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वो हैं जिन्होंने फाइनेंसेस नहीं प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अदर देन फाइनेंसेस उन्होंने अपने आउटस्टैंडिंग खड़े कर रखे हैं, या तो बैलेंस शीट में या अदरवाइज। सो क्लेम सेटलमेंट के लिए एक बार कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जब बन जाता है तो सबके क्लेम्स को ओवरऑल वैल्यू के तौर पे देखा जाता है, और द वैल्यू दैट इज डिराइव्ड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर द क्लेम is eventually paid to everybody in the list of claims that has been prepared by the resolution professional. So जो ओवरऑल रिकवरी हम रेजोल्यूशन प्लान से लेकर के आ पाते हैं, वो हम ओवरऑल रिकवरी के पेमेंट्स कर रहे होते हैं, और उसमें हम किसी भी तरीके का हेयर कट ऑफर नहीं करते। हाँ, लेकिन इसमें ये होता है कि कई बार रेजोल्यूशन प्लान में अगर कोई भी क्लेम ऐसे आ रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसे सेटलमेंट आ रहे हैं जो कि अनसर्टेन है, तो हम इस वैल्यू को डिफाइन करके मेंशन करते हैं कि हमारे जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं उनके ये पेमेंट्स होते हैं, और इसके बियॉन्ड अगर हम बाद में इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशंस को रन करके कुछ एक्सेस वैल्यू जनरेट कर पाते हैं और हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का पे आउट पूरा हो जाता है, तो फिर एडिशनल पेमेंट उनको जाता है। Okay. Okay. So anything else you would like to highlight? You have a few minutes. मेरा मेंशन यहाँ पे ये होता है कि मोस्ट ऑफ अस हु आर वाचिंग दिस वेबिनार, इसमें काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, लॉयर्स हो सकते हैं। आई कैनॉट कमेंट ऑन द टाइप ऑफ ऑडियंस, बट मेरा कहना यह है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक बहुत ही अच्छी फील्ड है जिसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है, और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम सब इसको अगर ठीक तरीके से प्लान आउट करते हैं तो दिस कैन एक्चुअली गेट अस अ वेरी गुड रेवेन्यूज एज पर द प्रैक्टिस आर कंसर्न। सो इसको एक प्रोस्पेक्ट के तौर पे देखना और इसके लिए प्लान करना एक अच्छी फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो सकती है हम सबके लिए। इंस्टीट्यूट
बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें, मैंने स्पेशली अलग से मेंशन किया था, ये एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। इफ एनीबडी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में है, तो वो एक प्रोफेशनल डिग्री पैरेलली होल्ड करता है और इंस्टीट्यूट उसको ऑब्जेक्ट नहीं करता है। वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की प्रैक्टिस होती है, और बाकी सारी जगहों पे ये अलाउड नहीं है। जैसे बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई हैव कंप्लीटेड माय लॉ, सो आई कैन नॉट प्रैक्टिस एज अ लॉयर and I practice as a chartered accountant as well. But as far as the insolvency licenses is concerned, I can be an insolvency professional practicing along with my chartered accountancy practice. वो अलग बात है कि दोनों को पैरेलल करना कितना feasible possible होगा, because it actually is a very consuming part, but it is a possibility and it can be a very great value addition. All right, sir. So on behalf of Committee of MSME and Startup, ICAI, I extend a sincere gratitude to you, our speaker, CA Nirbhay Khanna, sir, for sharing your valuable insights on a pre-packed insolvency resolution process for MSMEs. Your practical experience and clarity have truly helped us understand how we, as a chartered accountants, can play a stronger role as a turnaround partners for MSMEs. I also thank you all the members and participants for their active presence and engagement today. Questions were wonderful and actively answered for in detail by sir. Looking forward to your continued support and participation in our upcoming MSME part for have a wonderful day ahead. Thank you. It was a great pleasure to have this place and discuss such a wonderful topic. I believe I tried to communicate, and it was quite a technical topic. So I hope you people can relate to what we discussed. Absolutely, sir. Yes. Thank you so much. It was a great pleasure. Thank you. Thank you, sir. Thank you for wonderful session, sir. Thank you, Thank you. ma'am. Thank you for coordinating the session. Thank you, tech support Thank you. team. Thank you.